इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल IQAC और ऑटोनॉमस सेल गवर्नमेंट DB गर्ल्स PG कॉलेज द्वारा आयोजित 3 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हमने 23 से 25 अगस्त तक आयोजित किया है, जिसका विषय है फ्रॉम रियल टू वर्चुअल पैराडाइम शिफ्ट इन लर्निंग। उसके दूसरे दिन मैं डॉक्टर कल्पना मिश्रा पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि ये आयोजन ऑटोनॉमस सेल और IQAC के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, मैं ऑटोनॉमस सेल प्रभारी डॉक्टर अभया जोगलेकर मैडम को स्वागत भाषण देने के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर अभया जोगलेकर। मैडम अनम्यूट कीजिए। ओके, एम आई ऑडिबल? यस मैम, यस। मैं ऑडिबल हूँ? ओके, नमस्कार आप सभी को। ये 3 दिवसीय हम लोगों का जो FDP कार्यक्रम है, फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में मैं हमारे अतिथियों का डॉक्टर श्रीधर और आज के हमारे द्वितीय जो स्पीकर हैं डॉक्टर मस्ता, इन सबका स्वागत करती हूँ। और इसके साथ ही आप सभी का, जितने भी पार्टिसिपेंट है, अटेंडी हैं, उन सबका मैं स्वागत करती हूँ। और हम रियल से वर्चुअल इसमें लाइफ में प्रवेश कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कल हमने जितना सीखा था आज हम उसके आगे बढ़ेंगे, ये मैं पूर्ण रूप से मुझ में आश्वस्त हूँ। जैसा कि मुझे मालूम है कि आज श्रीधर सर हम लोगों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर शायद के बारे में बतलाएंगे, और कल घनश्याम सर ने अपने उद्बोधन में बहुत हम लोगों की आई ओपनिंग का काम किया था और ये बतलाया था कि किस प्रकार से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमको रियल से वर्चुअल में आना है। इवन रियल से वर्चुअल में आते समय हमको दोनों को बैलेंस करके चलना है। तो निश्चित तौर पे आज आप दोनों का जो उद्बोधन होगा वो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा हम सबके लिए। और कल के कुछ कोट्स जो हमको घनश्याम सर के द्वारा जो अपने उद्घोषणा में बातों में बतलाया गया था, उसको मैं जरूर से आपके सामने कोट करूंगी, क्योंकि हम वो रिकॉल करना जरूरी है। फिट वही जो फिट होगा वही हिट होगा, तो इसलिए हमको फिट होना है। और फिट होने के लिए आज देखते हैं कि आज हम लोग नया क्या सीखते हैं। मैं आप सबका बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए कार्यक्रम की जो उद्घोषिका है डॉक्टर कल्पना मिश्रा, उनको माइक पुनः सौंपती हूँ और आगे की कार्यवाही करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। पुनः आप सभी को इस कार्यक्रम में भागीदारिता के लिए आप सबका स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू। ओवर टू कल्पना। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब मैं आज के अपने FDP के दूसरे दिन के पहले वक्ता विषय विशेषज्ञ डॉक्टर R श्रीधर सर को सादर आमंत्रित करती हूँ। उनका एक संक्षिप्त परिचय आप सबके समक्ष में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। डॉक्टर R श्रीधर वर्तमान में कलिंगा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, वाइस चांसलर हैं। वे मैनेजमेंट के प्रोफेसर रह चुके हैं। उनका कार्य अनुभव बहुत ही विविधताओं से भरा हुआ है। सबसे पहले उनका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस जो है वो 1983 से प्रारंभ हुआ और 87 तक वे फार्मा इंडस्ट्री में सेल्स एग्जीक्यूटिव रहे। 87 से 2003 तक रीजनल सेल्स मैनेजर रहे। 2004 से जोनल सेल्स मैनेजर और 2005 में ऑल इंडिया फ्रेंचाइजी उन्होंने ली। 2004 से 2007 तक वो पर्ल पैसिफिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर के पद पर सुशोभित रहे। उनका एकेडमिक अनुभव भी बहुत विविधतापूर्ण है। 2007 से 2014 तक वो RIT में डीन मैनेजमेंट स्टडीज के रहे। 2014 से वे हेड ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट रहे कलिंगा यूनिवर्सिटी में। बहुत जगह वे मास्टर ट्रेनर के रूप में भी गए, जिसकी संख्या बहुत बड़ी है। जर्नल्स में अब तक उनके 18 पेपर पब्लिश हो चुके हैं। उन्होंने
1000 से ज्यादा MBA छात्रों को और 500 से ज्यादा BBA छात्रों को प्रोजेक्ट वर्क में सुपरवाइज किया है। उनकी PhD मैनेजमेंट से छत्तीसगढ़ के ही विश्वविद्यालय से हुई है। सर मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी जाने जाते हैं और निरंतर फेसबुक में और अलग संस्थाओं में जाकर वे मोटिवेशनल लेक्चर्स डिलीवर करते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हम उन सबको न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर सुनने जा रहे हैं। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर आर श्रीधर को न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर अपना वक्तव्य देने के लिए। डॉक्टर आर श्रीधर। मैं अपने पहले वक्ता डॉक्टर आर श्रीधर सर को सादर आमंत्रित करती हूँ। कल्पना मैडम, ये स्क्रीन मेरी विजिबल है क्या? उनकी पीपीटी मेरे पास में है। नहीं आप देखिए तब आपकी स्क्रीन, हाँ सर, आ गई ना प्रेजेंटेशन स्क्रीन? जी जी सर। डॉक्टर आर श्रीधर सर। मस्ता सर जी। वो सर सर नहीं ज्वाइन कर पा रहे क्या? हाँ, वो शीला मैडम के ही लैपटॉप पे है वो, तो कुछ देख, या तो कॉल करके देखते हैं उनको एक बार। जी जी सर। सर आ गए हैं सर। आ गए ना? नहीं सर, आ गए हैं। हाँ। ओके। मैं पुनः सादर अभिवंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ हमारे पहले स्पीकर डॉक्टर आर श्रीधर, VC कलिंगा यूनिवर्सिटी। Hello, am I audible? Hello? Yes, sir, we can hear you. You are audible. Yeah, fine. Okay. Thank you very much. Now, respected Principal Madam and respected all the governing body members who are organizing this committee, this program, and along with all the faculties, and good afternoon to everyone. Now, the subject is, as given to me, that is National Education Policy. Yes, it's a very important subject. Now, I'm not going to read the, the government draft. It has been given in the various newspapers and various, online programs. I'm going to present you my own perception regarding this draft. How this draft is going to work. And being a teacher, what I feel, the draft has got own advantages and disadvantages. It has got own plus and minus points. But being a teacher, what my perception is, we should focus only on the plus, the positive aspect of the draft. There are minus. No, we cannot say any draft or any sort of memorandum cannot have any shortcomings. So there are shortcomings in the draft, but we are not going to focus upon those shortcomings. We are going to discuss only the plus points, the positive aspect, which may convert or transit our student life from one stage to another. Now I want to cite some example. Recently, I was going through in the newspaper just 15-20 days back. In Chennai, there was an interview for class 4 employee, and that was the semi-government job, contract job. Okay, it's a government, semi-government only, but contractual job for class 4. Many people are applied for those jobs. Out of those applications, many were engineers, and they were hided their qualification. They shown
12th only, because that job require only 12th pass professionals. So those many engineers, they hided their qualification, and they have given only, they have passed the 12th examination. Don't you feel it's a big slap on our face? We are hiding our education. We are hiding our qualification. We are hiding our skill. So what is the use of these kind of educational policy, where students, where our citizens are hiding their qualification because they are not able to get the job as per their capabilities? So I'll always say it's a big question mark on our education policy. This is example number one. And example number two is, recently in railway, there was a examination for gangman. Gangman, lineman means those class 4 people, those who correct the railway tracks. They walk over the railway line and correct the things. And in these cases also, many people and they want only 12th pass. In these cases also, many students were, many applicants were graduates, postgraduate, and unfortunately engineers also. So again, it's a shameful act. Even after getting a proper education, they are hiding their qualification. So again, what I mean to say is, the existing education policy is feasible or not. Whether the existing education policy is giving the job or not. Many questions are there. So on these basis, because of these incidences, and there are many such incidences which are going on in our society. Still, if you see the employability ratio is just 40% only. Means every 100 student, only 40 students are getting the job. I'm talking about after the school pass out, after the 12th, only 40% students are getting their job. Again, it's a big question mark whether our education policy, which is existing now, it's demanding the suiting the demand of the industry or not. So based on this, many stalwarts under the leadership of Mr. Kasturi Rangan, many people joins together. They worked very hard for 5 to 6 years to develop a new educational policy. So we are going to discuss only those draft, new education draft, what this draft says. I'm not here to copy those, whatever they said. This is my assumption, because this is the very initial stage only. This has to be put in front of the various parliamentary affairs, various Rajya Sabha affairs. Then the bill is going to be passed. So that's the reason I'm not going to discuss whether it's right or not. As a teacher, our job is to see the positive aspect of the draft only. Now the question is, as I said, what is the need of the new education policy, a new national education policy? Already the policies is there. Since 74 years, we are following those policies, and there is no change in this policy. So what is the urgency in, to introduce a new policy? So if you do a certain research, a small research, what is the need of new education policy? So I have charted out certain points. Because of these reasons, the time has come to change our education policy. Point number one is no national education system. You must have seen there is no system at all. See, if you follow the school education especially, there are various boards. According to a recent study, in India, there are 16 kinds of boards are operating. 16 kinds of various boards. The boards may be from the state government, the boards may be even from the private sector, the boards from the central government. There are various boards. So how to judge the student performance? So there is no uniformity in the education system. So that's why there is an urgent need for a new educational policy. Point number two. Sir, please show me that slide. It's not visible. Yeah. Number two is English and domination. If you see the education policy, okay, the present education policy which we are following, English is everything. You may be good in Sanskrit, you may be good in Hindi, or you may be good in any of the local language, no value. You should know English, you should study in English medium, you should speak proper English, you can write few lines, mean you are educated, and you may get the job. Why this is so?
when we have got around 14, 15 languages are their national language. Apart from, we have around 700 language in India. So only we are running behind the English. That's the reason there's a need to change our educational policy. We should not wholly depend upon the English only. Sir, please. Sir, slide दिखाइए. Yeah. Then education is vague, as I have discussed. There is no connection between your education and your employability. You study something, you get some job. I know many engineers are working in the bank. But what is the meaning of doing engineering? I know doctors, they are working as an administrator. We are wasting a clinician. A clinician being wasted, they are working as an administrator. So like this, there is no connection between your study as well as what job you are doing. So there is a big gap. So with this national policy, we have to bridge the gap. Sir, please. Hello, sir. Yeah. Then, sir, पहले आइए. First, पहले दिखाइए sir. तब तेरे पास में वो देख के बोलता हूँ. Yeah. Then, failed to keep the pace with the social, economical, political, technological development. If you see the present education system, there is no match. No one knows how our country is growing. What is the physical deficit? In what way? What is the growth rate? What way India is growing? What are the economy? What are the basis of economy? What are the pillars of economy? No, we don't know the basics. We are BSc in botany, we are BSc in zoology, we are BSc in chemistry, we are BE in mechanical engineer, but the basic we don't know anything. So that's the reason the education which we are going through is not matching with the demand of the society or demand of the industry. Then no strong character building. You tell me, we all are educated. We have seen people are spitting on the road. Our respected Prime Minister has to say Swachh Bharat Abhiyan. You tell me which country's Prime Minister is advising every people to follow the hygiene. This is the job of a Prime Minister. He is shouting everywhere, keep the India clean. So where is the character? The education should always build the character. That's a big lacuna of our education system. There is no connection between what we read and what we do. So that's why the education must build the character of the citizen. The education must build the character of every individual. Okay, then comes the wastage, no use of human resource. India is the country where we are having the largest amount of students, the student section, the student class after China. So we are not using this power. India is rich in human resource. We do not have anything. We do not have. See, if you see the natural resources, if you see the other things, if you see the technology, if you see the research, we are lagging behind. Our strength is only the human resource. Out of 700 crore population, our population is 150 crore almost. Every 7th person is Indian. So our strength is our human resource. But this education system which we are following, no way helping the human resources. How to utilize this young strength, the young blood, the budding future employee, we don't know. So that's why there's a need has come to change the education policy. Then come not effective use of democracy. Means we don't know. Our country has got very useful strength, that is democracy. So we don't know how to use our rights. We follow the caste, religion, and we are divided in many ways. So we don't know our strength of democracy. So education must educate the student to inculcate what is democracy, how we can understand the role of democracy, how we can know the effectiveness of democracy. So the new education policy should focus the strength of democracy. Every student should realize, really we are fortunate. See the China, don't know what is going on. Many countries where there is no democracy, there is a open democracy. There is a country with a very clean democracy, like all Western European nations, like America, like Australia, like Canada. They are enjoying the fruits of democracy. But in India, still we don't know the role of democracy. So the education must educate us
the role, the responsibility, the accountability of the democracy. Then comes the no skill orientation, no skill at all. You tell me, I have seen people, they are MA, BA, MSc, they cannot write an application. What is the use of your education? I know people are MA in 4 subjects. MA in 4 subjects, what that particular gentleman is doing, it's serving in a state government as a clerk. Again, big question mark. What is the need of MA in 4 subjects to be a clerk? A graduation will do. What I mean to say is we are not able to develop skills. So that's why the education must have a connection with the skills of every individual. So that's why we need a new educational policy which can enhance the skills in the individual. The lack of research. Really, I am it's a poor. Our condition, our Indian condition is very, very poor. Do you know, in China, why I'm quoting China? Because China is our neighbor country. Every year, China is getting 25,000 patents. Just imagine, every year, China is getting, I'm not talking about the local patent, I'm talking about the international patent. They are getting the 25,000 international patent every year. What is our situation? We are getting average 400 to 500 patent every year. I'm talking about the international patent. Where is 25,000, where is 400, 500 patents? So our research is very poor. Right from the beginning, we never focused on research. That is the basic problem. So that's why the new education policy should promote the research among the students. No equal opportunity in education. We all know. A kid residing in rural area, he lacks in education, basic education. A kid even in urban area, but lack of money, not able to get education. If you see, the education is only urban oriented, and more so the education only for the rich class people or middle class people. So that's why education is not reaching to all the class of the people. Still, after 74 years, this is the fact. Then comes the poor international ranking. So this is another area of concern. Out of 100 top universities, ranked by the international agency, none of our Indian universities are existing in that rank. Out of 100 top universities, we are nowhere. Again, we say we have got IITs, we have got IIM, we have got many national institutes in India, but they are not able to compete with the international standards still. Though we say it's a big institution, but internationally, there is no role of these apex institutions. So that's why a new educational policy is a need of the hour to compete with the international standard. Then, largest strength of students, I already mentioned, our number of students are very high compared to all other countries when I discussing the human resource. Then, lack of accountability. No one is accountable. You tell me in India is the only very strange and fancy country, nobody is accountable. He may be a collector, maybe a SP, maybe a student, maybe an administrator, maybe we as a teacher. There is no accountability. We are not accountable for anything. Our job is to come, teach, go. Whether students are passing or they're failing, we are not responsible. Like why I'm quoting myself as a teacher, because this is there with all the department. You go anywhere in India, in any department, maybe government sector, maybe a private sector, maybe a semi-government sector, everywhere, nobody is accountable. So our new education policy should have some link with your accountability. Every citizen of India must be accountable. Then comes the important thing is bureaucratic interference. No meaning of discussing this highly controversial subject here. There are bureaucratic interferences in everywhere in India, maybe in the education sector or anywhere. The bureaucracy is creating problem, as well as the political scenario is also creating a problem. That's why what is our humble submission is the new educational policy or national educational policy should have free from these kind of obstacles. Then poor lab facility. And if you go to any, I have being a college teacher, being a university teacher, I have been to many colleges, many schools for the training.
Really, everywhere the lab facilities are very poor. We do not have the high tech, the machinery, nothing. Just one room is there, they say it's a lab. So we have to improve our lab facility. That is also very important if we want to compete with the international scenario. No change in teaching methodology. That's a fact. Since 70 years, same teaching method. We are going into a class with chalk duster, teach the student, blah, 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 coming back. So the same thing we are doing since 70 years. So there's an urgent need of the change in teaching pedagogy also. As a teacher, we have to change our style. We have to change our orientation towards teaching. We have to express ourselves differently. We have to be competitive as compared to the international scenario. So then comes the another need for the new education policies. Many subjects are overlooked. According to recent recent statistics of World Trade Organization. This is the statistics I'm quoting from 2018, 2018. World Trade Organization says in coming days, around 50% job will be available on these subjects only. Which subject I am quoting in front of you? This, if students study these subjects, they will going to get the job. See, just imagine 50% of job are lying in these subjects. I'm quoting certain example of the subject. Number one, e-commerce. You tell me which college seriously takes this subject now at present scenario? No. We are not, see, online companies are there, so many, but still we are not utilizing in teaching what is e-commerce. What are the e-commerce subject? How to develop student skills in e-commerce? No. But 50% jobs are lying. So these subjects should be taken into care. Then e-governance. No, nobody is speaking. No college, no university is taking care of e-governance as a subject. Then digital marketing. This is another sub area where majority of job we are going to have. But in our present traditional curriculum, we are not discussing digital marketing. No content marketing. There is no content marketing as a subject in any university or in any schools or any college. Nutrition related subject. Very important role is going to play the food which we are consuming, the role of our food. The role of our food has got direct connection with your health and everything. So nutrition related subject, very less number of colleges and schools, they are not taking care of these subjects. Then comes automobile maintenance. This is another subject. If you go to Western country, this subject is there. The students are getting the knowledge, skills regarding how to maintain the automobile. We don't know anything. For every small thing, we are running behind the mechanic. So these subjects, no, we are not teaching. We are not taking care. Then insurance. Though we speak regarding insurances, but we don't know. Our knowledge is limited in insurance field. Maybe home insurance, maybe education insurance, maybe nowadays which is getting the momentum, that is health insurance. We don't know anything about health insurance, the role of health insurance. That's why in every college and every school, health insurance must be taught. Then comes the safety and security, another subject. Overall, what is safety? What are overall security? While walking in the road or while serving in the factory, while serving in the office. No, there is no subject. Nothing. We don't know anything about the security or the safety. Then epidemic and pandemic management. Now we are shouting because we are suffering from COVID-19, the country like India. But if you go to Japan, if you go to Korea, these are very, very common. If you go to even the poor country like compared to India, Vietnam, Indonesia, they are well versed with these subjects. They know whenever epidemics breakouts, whenever pandemic breakouts, how to survive in these conditions. We still don't know. We are moving on the road without using the mask. Government is shouting, politicians are telling, everybody is advising, but we are least bothered. Because we have never been educated in that way. I am a corona proof. Corona never going to affect me. Why? You are not a god. You are not an alien from the other planet. Everybody has got the same exposure, but we are never thinking on this area. So that's the reason epidemic and pandemic management as a subject must taught in the school as well as in the college. Then stress management.
We all know nowadays in very young age, people are suffering from psychosomatic problems like blood pressure, diabetes, heart problem, asthma, whatnot. Because we don't know, how to deal with the stress. Small student we are listening, a school student studying in class 6 and class 7, she failed and committed suicide. Shame. A student in class 5 and class 6, because she or he failed, she gone for the suicide. So we are never, we don't know how to deal with the stress, how to live with the stress. So stress management should be a subject. Then disaster management. See, the way we are disturbing the nature, the way we are disturbing the environment. So all the natural calamities like earthquake, volcanic eruption, and floods. These are very common in coming days. And change in the temperature of the planet. Everything is going to affect. So we should know how to manage the disaster management. How to we can survive with the disaster. There is no subject in India. Then survival skills, as I said. Now, as we must have read during our school days how to survive. There are many theories we are discussed. Only theory part only. In this situation where the intense competition, there are lesser number of jobs, there are lesser number of opportunity, growing population, poverty, disasters, epidemic, pandemic. In these conditions, how to survive? So the college, the school must teach the student these survival skills, how to survive in this situation. Then cyber security. In coming days, everything will be on cyber only because of this pandemic situation or epidemic situation, or if you see the many aspects of business. So the business will have more orientation toward the cyber only. So there is no teaching on cyber security. Then we are shouting on GST. Okay, the GST ज़्यादा हो गया, GST कम हो गया, GST is creating this problem. Because of GST there is a price hike. Out of 250 international countries, 250 countries, okay, in 220 countries there is GST. GST is nothing unique. That is, every country has imposed, but we don't know. We are shouting GST, GST. No, what way GST is going to be useful? What is the meaning of GST? What is the definition of GST? And what way GST is going to improve our lifestyle? Many things, but we are not bothered to study this subject. There is no subject in our in curriculum, maybe in school or college. So this has to be included in the new educational policy. Then big data management. This is one more subject where there will be plenty of job. You may ask, what is big data management? See, in coming days, everything is data only. Data may be customer data. Data may be any mineral resources data, human resources data. The company which is having more number of data the company will be more successful. So how to manage the data, how to procure the data, how to maintain the data, there is no subject. So that's the reason. Now, you must have heard Facebook is selling the data. That is our data, our detail. Facebook is selling. Google is selling. So we should know how to maintain the data, how to get the data as an organization. Then comes social marketing. You must be noted in now social media is dominating. In social media, there are various marketing programs are there. So we have to study those subjects. And green marketing. We say we are using green product. We are using green fabrics. We are using green edibles. But how to market this product? No one knows. Everybody says green means expensive. We know only one thing. Green means expensive. That's all. Because there is no proper marketing for green product. So the new educational policy, national policy must address these subjects also. That is green marketing. So these are the need of the hour. The new educational draft must include these subjects. Sir, next slide, please. इसके पहले सर, इसके पहले वाले स्लाइड. इसके बाद एपिडेमिक पेंडेमिक, देन इसके बाद नेक्स्ट सर. ठीक है. Okay. Now, what is the importance? No, what is the importance of higher education? No, we should understand the thing.
We are doing BA, MA, everybody is studying, okay. But what is the importance of this? Why by doing BA, MA or graduation, post-graduation, what basically we should learn? What, not botany and what say the leaf, root, shoot, herb, shrub. In what way it is going to help us? After doing BSc botany, I am serving in a bank, so my knowledge is not useful for me. So any higher education should help in this aspect. That is number one is to improve per capita income. Do you know what is our per capita income? Indian per capita income 5,000 rupees only. That's all. Our per capita income is 5,000 rupees. What is use of the education? Where our average income is per person in India is earning just 5,000 rupees. What is the per capita income of South Korea? Very new nation. This has got the progress after just before 30 years. The per capita income of South Korea is 60,000 rupees. So the value of higher education lies here. So your higher education must yield results, must improve your income, must improve your national income. So that's why the importance of higher education must be improve per capita income. Then improved health. We never follow the basics of health. If your country is healthy, your country's citizens are healthy, then your country is healthy. That's a basic, quote. Every citizen of our country is healthy, then our country is healthy. So the education, higher education must educate every student regarding the improvement in the health. Then civic involvement. I said civic sense. Should not spit over the road. Follow the queue sense. Respect the others. Use the friendly language. We are all lagging. So the new education policy or the higher education should give this practical aspect. Then personal development. I should develop. I have been, I am a minimum graduate. I am postgraduate. What kind of development I have inculcated in myself? So personal development, my own development is also important with higher education. Then better communication. Very important thing is we studied everything, but we don't know how to speak. We don't know how to promote self. We don't know how to write resumes. We don't know how to give interview. And I have seen many people, they are masters in the subject, but in interview they fail miserably. I have seen in civil services examination also, people are clearing in the written examination, they are failing in the interview. The major issue is lack of communication. We don't know how to communicate. We are good in Hindi. We speak better Hindi. We know Hindi. We know English, but we don't know how to speak. We don't know how to communicate. So that is very important. Any higher education should improve, should polish your language. Then realization of passion. What is my passion? See, what the good educationist says, your passion should be your job. I am having passion for gardening. So my profession should be a gardening. I am having a passion for business. So I should do the business. I am having a passion for computer. So I should be a computer programmer. I am having a passion for carpentry. I should be a better carpenter. So only the higher education gives you this idea, what is your passion. Otherwise, up to school education, we don't know what is my passion. See, I'm telling you my case. Up to my 45 years, I was working as a marketing executive. I was not knowing my capability as a teacher. I was not knowing my capability as a communicator. I was not knowing my capability as a leader. At the middle age, I changed my direction and entered into a educational field, academic field. After that, started writing papers, getting promotion, studying further, going for PGs, going for PhD, everything. After 45 years only. So this is it's not my fault. I never say it's my fault. It's a fault of our education system. I don't know my passion. To find my passion, to search my passion, I have to wait for 45 years. So similarly, so the higher education must provide, must search, must found the passion in every individual. Then sense of discipline. We all know we lack in discipline. So the higher education must give discipline in a student.
sense of accountability, I already discussed. Then learning how to think. We don't know how to think. Planned thinking, many things, how to think, there are separate codes. So with higher education, we should give a roadmap to the student how to think regarding this subject. Sir, please, next slide. Now, in short, as I said, I'm not following I'm not copy pasting the new draft. I'm giving my own perception depending whatever I understood by those drafts. I have given my own perception. It may be right, it may be wrong, but I try to follow whatever is given in the draft only. So while preparing the draft, what my feeling is, the policy maker, as I said, Mr. Kasturi Rangan and all other towering personality, they took certain points in their mind. While preparing this draft, I have to take care of these points. The point number one is universalization. Universalization means what they say, the education standard must be equal. If I'm studying in Kanyakumari in class 1, if I'm studying in Kashmir in class 1, the educational level must be equal. There should not be difference between these two states. Similarly, what they say, the international standard, we have to match with the international standard. So that's why universalization means the educational standard nationally and internationally should be equal. This was the major point. Point number 2 is fundamental learning by 2025. What this draft says, what this draft promotes, there should be a minimum basic education. Everybody should achieve a basic school education by 2025. That is their motto. At least up to 10th class. So that motto should be achieved by 2025. This is their another perception. Then is 100% gross enrollment ratio by 2030. What they say, up to 2030, every kid, every citizen of India, every kid of India, every children of India should enroll in the school education at least. No, you'll say, no, that is happening. Everywhere the students are going to school. No, still in India, 30% of kids are not going to schools. 30% of kids total. If you see the total birth of kid, total production of kid, out of these kids, 30% of kids are not going to school at all. So this policy says by 2030, at least 100% student must get minimum education up to 10th class. Teacher skill enhancement. This is very important, and I admire this step by the government. What they say, the teacher must train periodically. If you see what is our training, we are not getting any training. The day we joined the college, still same we are continuing, and we are going some for 4 or 5 program we are attending, some basic program, that's all. There is no proper training schedule for teacher. Now the new draft says the teacher will be trained twice in a year. Every 6 months, for a school teacher as well as for the college teacher, there will be a training schedule for minimum 3 days. So 6 days in a year, the teacher of school as well as college are going to get the training programs. Then one skill to student. Every student, right from the school level to college level, one skill will be developed. As I said, maybe gardening, maybe carpentry, maybe the knowledge about the washing machine, maybe knowledge about the fridge, some skill, so that if he or she is not getting the job, out of her or his skill, he can get the she can become a having self business or entrepreneurs or self-employed. That's why government is planning to part one skill to the student. It may be music also, singing, some skill. This is also right motto for the government. Then common standard of learning in public and private. I don't know how it is going to take place, but the planning is very good. What they say, you may be studying in a poor school, a poor rural area school, or you may be in a better school like DPS, where they charge us higher fees. So the standard of education must be equal. Again, a question mark, but it's a good idea. What they say, this education should be same
for poor as well as the for rich people. So again, I have got my own doubts here, but still, but I appreciate the thinking of the government. Then employability. What government says, every student must employable, otherwise no meaning of education. After doing after passing out the college, after passing out the school, if I am not getting the job, so what is the purpose of my education? Big zero. So that's why now new education policy says every study, maybe it may be a zoology, maybe engineering, maybe a medicine, maybe anything that should have a link with the employability. So the government is focusing more on a study with connect with the employability. Next. Reforms in the school education. Now, what kind of reforms they introduced in the school education? In the new educational draft, what are the reforms? Kya changes leke aaye? So I'm not here to discuss all the things, only the major point which government is planning to introduce. So these are the reforms. Board exam low stake. Now in coming days, there will be not much importance to the board examination. 5th, 8th, 10th, 12th, something we used to study, board exam. During board exam only we get tens. Every family person get tens. School teacher, hey, you are in board, you are in 12th, you are in 10th. Those kind of hype will be reduced. Because we are preparing student only for the board examination, that's all. 5 में board hai, so study properly. 10th में board hai, study properly. 12th में board hai, study properly. What about class 1, 2, 3, 4? What about class 6, 7, 8, 9? No, we are not serious in these classes. Only board examination, those classes, wherever the board exams are there, we used to give major focus. We mean student, parents, teacher. So now what government says that we are going to provide low stake. We are not giving much importance on the board examination. How it will be, I don't know, but they are planning for this. Then point number 2 is mother tongue medium of instruction. You know, many research scholars says, many scientists says, if you study, up to your basic level of education in your mother tongue, you will be well versed in this subject. This is the truth. If you up to 5th class, if you follow your mother tongue, all this study, you may be a Gujarati, study in Gujarati. You may be a Marathi, read in Marathi. The planning is like this because this science, this statistics says up to fundamental education, up to 5th class, if you study in a local language or your mother tongue, so your foundation will be better. So this is the study, and they are following this. Again, it's because I don't know how they are going to create the technical vocabs, the dictionary. It's difficult, but planning is very good. I don't know if I want to do everything in a Gujarati medium, a Tamil medium, everything, maths, history, zoology, whatever study, but we are not able to develop the vocabs in our mother tongue. So government is planning to develop the vocabs in the 15-16 mother tongue, which is recognized by the government. So this is also a good plan. Then report card, skill and capabilities. This is very important. See, usually what we see in the report card, that is our nature. Okay, history में कितना मिला 100 में से, physics में कितना मिला 100 में से, 70 मिला, okay, 60 मिला, okay, 50 मिला, poor. So that's the only way of measuring the performance of the kid. चाहे teacher हो, चाहे maybe a parents. Now things are changing. In coming the change which the government is suggesting, what they say, report card में there will be a shades of your skills, shades of your capabilities. English आपने पढ़ा है, what is your communication skills? वो report card में आएगा. What is your level of intelligentsia? How you are innovatively thinking? How you take decision as a student? This all shades will be there in the report card. Means that total development, not only the subject. 80 मिले, 70 मिले, 50 मिले, 20 मिले, fail हो गया, first class, second class. No. In all, how you are developing. The report card will have the exhibit everything, every personality of a kid. This is also a good way of thinking, promoting education that is linked with the employability. Then basic literacy and basic numeracy, very important. See, I'm a 10th pass, I'm a 12th pass.
What is my basic level of education? What is my basic knowledge? What is my basic knowledge regarding the science? What is my basics regarding the mathematics? No idea. So the education will be more skill related. 2 plus 2 is equal to 4. Why? We don't know, because book mein likha hai. So there will be a practical aspect of this. 2 plus 2 is equal to 4 because of this. What is Newton law? I don't know. I studied Newton law in 10th, 12th. Still today I am not able to utilize, I understand. Einstein's principle goes out of our head. What he said, why he said. So there will be a practical aspect of this everything. What Einstein said, why he said. That is very important. That if you want to be a scientist, we don't know the basics. If you want to be a researcher, how can you research without knowing the basics? As I said, we are very poor in research. India is very, very poor in research. We are sitting in a room. What is our research contribution? You tell me. You see your clock, your fan, your wristwatch, your mobile, your telephone, your automobile, your washing machine, anything. What is our contribution? Big zero. That's why no research at all, because our foundation is weak. For the sake of passing the examination, we are studying. For the sake of getting job, we are studying. That's all. So that's why the government is making more strong foundation in the basic education. Then no rigid no separation between the stream. You must have heard this. There will be no what to say. Suppose your interested topic is computer. Okay, take computer along with music. So this kind of fancy combination or more practical combination is going to come. My subject is geography. Along with geography, I'm going to study some mechanical subjects. You can take any stream. There is no rigid separation. Arts के बच्चे arts ही पढ़ेंगे, maths के बच्चे maths ही पढ़ेंगे, science के बच्चे science ही पढ़ेंगे. I am good in economics. मुझे economics अच्छा लगता है. But I do not like political science. I do not like other subjects. So you can study only economics. और साथ में मुझे botany पसंद है. So study economics with botany. So like this, permitted combination. आपकी मर्जी से सब्जेक्ट ले सकते हो, आपकी मर्जी से सब्जेक्ट चुन सकते हो, पढ़ सकते हो. So everything depends upon your interest as well as teachers' observation about you. Then comes national assessment, and then importantly, holistic development 360 degree. See, as I said, just education will not going to solve the problem. And for your information, government is already signed. आगे हम देखेंगे FDI. FDI means foreign direct investment. Now many multinationals are coming to India in every segment. Maybe strategic department, maybe electronics, maybe in footwear, maybe in education. Universities are going to come to India. Already the government has signed the memorandum. Many universities from Canada, from America, from Europe, from Japan, from Korea, they are coming to India. They are going to start their university. So it just we need to develop our student standard matched with the international one. So that's why we are thinking about the holistic development, overall development of the student. Then National Assessment Center. This is very important. This what they say, at least twice in a year, they are going to follow that. We given the name Parak. Parak for both teacher as well as the student. What is Parak? P means performance. What is the performance of this teacher in past 6 months? What is the performance of a student in the past 6 months? That will be evaluated. Number 2, assessment. What is the quality of assessment of teacher? What is the quality of assessment of the student? This will be evaluated. Then R. Parak in R means review of your performance of teacher as well as the review of performance of the student. Then knowledge level. What is your knowledge level? Knowledge about your subject. What you have learned new things in your subject. So how much you helped in the research, especially. So for both teacher and student will be evaluated. Then holistic development, as I said, overall development of student and the teacher. So these Parak will be taken into care for student as well as the teacher, and this will be done once in 6 months. This is also an important factor
for the career growth of a teacher, as well as, and especially for the young teacher or budding teacher. For them, it's very important because they want to grow. If you want to do well in your life, in your academic life, you have to follow these whatever the draft says. Then comes the digital libraries. National professional standard of teacher. All see, because once you follow the training schedule once in every 6 months, so every teacher, maybe from rural area, maybe from urban area, the standard will be equal. Government says that the education should be equal in the rural area as well as in urban area, in a smaller school and in a bigger school, because they are planning the national professional standard of teacher. They are improving through the training. So that's the reason the standard will be equal in the small area as well as the bigger area. Then a digital library. Government is planning to open a digital library in every schools and every college. Now again, you may ask, sir, how it is possible? Digital means where is the net facility? Many things are there, but government is already planned, and they are very soon they are coming out with this how they are going to improve the digital library system in schools as well as in college. Then mathematics reforms. What they say, mathematics is the base of all subjects. After a certain period of time, we leave mathematics in Indian system. I know the student after 10th they left mathematics. So some other subject they take, which is very easy, and study, get the marks, and no job at all. So what the new draft says, that the mathematics is base of all the subject. So up to certain level, they are not telling you have to study mathematics only. Up to certain level, for better reasoning, for innovative thinking, some mathematical brilliance is required. So government is planning to introduce new way of mathematics, which is more skill oriented, which is going to help you in thinking process. That too up to 8th class only, 8th standard only. So mathematics will be compulsory for up to 8th class. Then innovation. In everything, innovation is required. You are teaching, you are learning. So so the reforms, the various reforms the government is introducing to innovate the things. Then decision making. This is also important. Right from the school level, we are talking about the school level reform. That decision making, still students don't know what decision should be taken. कौन सा subject लेके पढ़ूं, क्या पढ़ूं? They depend upon the parents. They depend upon the peer groups. They depend upon the others. So उनके अंदर skill develop करना कि how to think, how to take decision. You see the West. बच्चा 5 साल का 6 साल का होता है, he become independent and is successful in the life. इंडिया में even after 10th हो, 12th हो, कॉलेज हो, शादी हो जाती है, बच्चा जो है पेरेंट्स पे डिपेंड रहता है, because we never developed the decision making capacity in the children. So we both are responsible, the teacher as well as the parents. So at least from the school level, हम एक सोच डेवलप कर रहे हैं कि the kids should take decision their own. Then comes the planning. What is planning? Career planning, study planning. So some planning methodology. कैसे चीजों को plan करें? This will be educated in the school level. Then scientific temperament. हर चीज को there should not be the thought process में कहीं ना कहीं science होना चाहिए. Why certain things are taking place? Why the changes are taking place? Scientific thinking होना जरूरी है. So that is also important. No, right? This has to be cultivated right from the school level. तो स्कूल लेवल से ही बच्चे के अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट हम पैदा करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस न्यू एजुकेशनल पॉलिसी. देन reduction in curriculum, very important. You must have seen a class 3, class 4 kid carry a bag of 20 kg, 15 kg. कुछ नहीं पड़ता उसमें से, आधा किताब वापस लेके आ जाता है. So no meaning of so many subjects. No, what government is planning, they are having a planning to reduce the subject by 50%. 50% तक का वो subject का pressure they are planning to reduce. So this is a very nice thing. They are making more focused, more committed student by reduction of curriculum. Then industry institute interface. I'm talking about the school level. हमने कॉलेज में सुना था कि there will be what to say, there will be a interaction between the college and the private industries. But this is going to take place after primary education only. The student will be going to a different industry, learning things.
We are going to call different experts from the industry. They will be coming to a school. They may be taking the classes. Okay, so giving the practical exposure of the subject, वो school से शुरू हो रहा है. Then now अब सवाल उठता है, where is the fund? कहाँ से फंड आएगा? Government is planning, जो फंड वो अभी दे रहे हैं उसमें 32% they will going to increase the fund, especially for school education, by 32% in coming days. So the fund problem will be taken into care. Now they are planning various use of technology. Teaching में जो technology use करने वाले हैं आगे चल के, those kind of technology which government is going to use. No, or we are going to use. Why to say government? As a teacher, we are going to use, or students are going to use in schools. Number one is the technology will be used in educational planning. For example, technology means one is computer. With the help of computer, we are going to plan our education. We have to be more computer friendly, being a teacher, a high school teacher, a school teacher. Then teaching learning assessment, as we already I discussed you, the assessment will be there for teacher as well as for a student. Administration and management. So there will be a separate department will be developed in school. स्कूल को चलाने के लिए एक क्वालिफाइड मैनेजर्स की जरूरत है. स्कूल को चलाने के लिए एक क्वालिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है. सो गवर्नमेंट इज प्लानिंग to develop better school administrator, better school managers. So they will be developing school properly. Then minimum human interface, very important. Why nowadays banks are successful? Why you do not have much complaint regarding the bank? Because we are not going to the bank because of the automation, ATM. We cannot complain ATM because we can complain a person, emotional clash. A person sitting in front of you, the employee, and I am a person, I am a customer. So there may be a clash, emotional clash. But here machine is there. You cannot blame anything machine. Machine काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं. I'll go to the next ATM. But बैंक में आदमी काम नहीं कर रहा है तो you will shout. So why this is possible? Because of the automation. In school also there will be a more automation so that there will be a less amount of grievances. Then e-content in regional language. All the e-content, new content, electronic content will be developed in the regional or local languages. And student and teacher, दोनों को समझ में आया ऐसे friendly software में काम कर रहा है. Already the government has started, and very soon they are going to introduce many software, especially in teaching for teachers as well as for the student, that will be more friendly to the users. Then virtual lab. Every school must have computer lab with high-tech computers. So this is also planning. That's why they are improved the funding also. More autonomy for schools. There will be more autonomy. Then lesser regulation. Control. No, school should be cooperated. College should be cooperated, not controlled. Say for civilized world, controlled word is obsolete. The control जो हम कहते हैं ना, control, नियंत्रण, that is not good for human being. We all are civilized people. So slowly the word control is taken away by the government, and they are introducing. That's why there will be lesser regulation. Control कम होता जाएगा. And PPP model, मतलब private public सब मिलके government मिलके model बनाएंगे, invest करेंगे, and the school will grow. Next please. Reforms in higher education. Now we have seen what kind of reforms in the school. All I'm giving you very basic knowledge to you. No need of reading lengthy draft. इसको हाँ पढ़ लेंगे एक बार तो you know what is going to, in what way the India is going to change with the educational standard. Now I'm talking about the reforms in higher education. Now we are more concerned here because this is our own curriculum. This is our own stream. 50% GER by 2035. What they say, जो अभी हायर एजुकेशन रेशो है वो 22% है. जो बच्चा क्लास 1 में एडमिशन लेता है उसमें से यदि 100 बच्चा पढ़ता है तो 22 बच्चा जो है किड्स गोज टू द हायर एजुकेशन. ओनली 22%. and rest are no, they drop out, they go for the job or business, something else. No, what government says, no, we want to improve this 22% to 50% by 2035. Means 2035 you will have the minimum graduate, postgraduate by 50% increase.
Flexibility of subject, as I have already discussed. In school level, government is planning for the flexibility of the subjects. Similar thing is going to happen in college also. A student can take subject according to his or her choice with any combination. There is no strict division. With science, you can take arts. With arts, you can take mathematics. With arts, you can take engineering. So there will be a different subject you can take depending upon the interest of the student. Then multiple entry and multiple exit. If I took admission in BA first year or BSc first year, I'm not happy. I can leave anytime. I can join some other college. I can leave some other college. I can come to your college. So there is no flexible. There is no restriction कि आपको graduate एक ही जगह से करना है. So कहीं भी कहीं से जा सकते हो. Suppose today I am in Raipur. Tomorrow I want to study from Delhi. Go to Delhi. You being an administrator, you have to give the TC. You cannot say no TC. You have to study up to the graduation year only. I can go anywhere in India. So the flexibility of taking admission and the flexibility of leaving admission will be dependent upon the student. The student will be student is going to decide. Then automation in administration, as we already discussed, the administration will be automated. The help of computer, other device will be taken into care. Then the UG undergraduate level will be 3 to 4 years. Some course they are still not declared which course they will run for 3 years and which course they will run for 4 years. Means they are going to follow both the thing 3 or 4 years. Then PG. See, even I am in the opinion PG should be of 1 year. If you go to any Western country, PG is of 1 year only. Only in India we study 2 years. Because we study 2 years, we study so many unwanted subjects. It is not needed at all. Because there should be a 8 to 9 subject in one year. So unnecessarily we are studying this subject. So the government is planning make PG 1 year, in some cases 2 years. But this is quite possible. Many of the subjects will be of 1 year only the post graduation. Then you must be knowing no MPhil. There will be no MPhil and more research intensive. Government is taking very serious regarding the research. They are promoting research right from the school level. So that's why when they are shouting the research, when they are promoting research for students, just imagine for our condition, being a teacher, we have to be very good in research. So we have to know what even they are planning for patent also. Teacher must have patent something. So they will give you all the funding. They will give you all the backgrounds. They will give all the knowledge. Go for patent of something. If you're a science student, a science teacher, go for patent. Even arts teacher, there are many design patents are there. Go for those patents. Government is after patent in coming days. So patent will be the major in research. Sir, please. And 25% increase in funding. Then again, you may ask me, sir, where is the funding? Government is planning to improve the financial condition by 25%. School, college education में जो खर्चा हो रहा है, अभी तक जो होता आया है, जो fund था, उसका 25% they are going to improve. And again, there will be a digital diary to every student. Now you may ask, what is digital diary? Digital diary means the student no need to carry the mark sheet, anything. A number will be given to every student. A digital number, say A32. I'm putting an example. A32. I'm going for the interview. If the interviewer put A32, then everything, all the horoscope, kundli of student will emerge in that digital number. Your college qualification, your extracurricular qualification, whatever you have done in your school days, in your college days, everything will be there on the digital. So no need of carrying any mark sheet, nothing, paperless governance. There will be no paper for student. Everything will be digitally controlled. So government is planning to provide digital diary to every student. Then assured employability. This is the good news. What they say, now we are taking care of employability. This is our job, government job, to provide employability to the student. Now again, not the government job, they're not assuring this. That's the reason they say we are inviting FDP, foreign companies, to India. You must be reading in the paper, railway is being privatized.
So everywhere the private is going to come, local companies, multinational companies, many things. So if you follow these, curriculum, these study methodology, so getting job will be not a problem. So we will be competing internationally. So that's why what government is telling, by doing this, by following these all aspects, employability will be much easy for the student. Then say national sign language. Especially you must have heard about the sign languages for the physically challenged students. So for what government is planning, there will be one language only. Because if when you're teaching in English, so your sign is different. Okay, for physically challenged student. When you are teaching Hindi, the sign is different. When you're teaching in local languages, the sign is different. What government said, now we are developing one sign language for all the students. I may be Gujarati. I studied everything in Gujarati, but I will understand the sign language because there is a uniformity in the sign languages. This is a very good step taken by the government to fulfill the needs of the physically challenged students. Then I have already discussed with you FDP in higher education. Many universities from various countries are coming, and sure within 2 years your Raipur will going to see some foreign university in Raipur. So government is planning this. Then Indian Institute of Translation and Interpretation. We have IITs, we have IIMs, we have the National Institute for Universities for Law. But we do not have any national institute for the translation and interpretation. So government is planning to open a universities for this. That is Indian Institute of Translation and Interpretation. And India is, the government is making plan to develop India as a educational hub in Asia. If you see the Asian, Asian continent, Singapore is a educational hub. The many people from various countries of Asia, they are migrating to Singapore to get the education because Singapore education is good. It's matching with the international standard. So government is planning within the span of 10 years, their 10 years program, to make India as a educational hub. So this is all about the new educational policy or national education policy. With my own understanding, I am trying to give you the insight of the draft. I'm not giving you very tough sort of thing. What kind of thing this changes, that changes, this percent of changes, this statistic, that statistics. I studied everything and I have discussed you in a very simple language so that everybody can understand what is the new national policy or what is the national policy. What are the subject will be there, how the change will going to affect the teacher, how the change is going to affect the student, how it's going to affect the employability. But yes, sure, we have to change. As a teacher, we have to change. As a teacher, we have to improve. As a teacher, we have to be trained. And as a teacher, we have to learn every day. That's the fact. The bottom line is this, we have to improve. Thank you. And now my session is over. I am leaving the session up to you. If you want to have any question, you are welcome. थैंक यू वेरी मच सर। अभी तक तो चैट बॉक्स में कोई प्रश्न नहीं दिख रहा है। हाँ जी। आपने डॉक्टर आर श्रीधर सर को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं क्योंकि नई शिक्षा नीति जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके सभी आयामों को सर ने बहुत ही सुंदरता से कवर किया है। सिर्फ टीचर्स के पर्सपेक्टिव से ही नहीं, स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से भी, और पूरे वैश्विक परिदृश्य में उन्होंने भारत की उच्च शिक्षा को रखा है। उसके ऑटोनॉमी मिलने से क्या फायदे हो सकते हैं, कैरियर के लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। इनके साथ साथ ही सर ने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी बहुत ही अच्छे से रखा है। और जो सबसे बड़ी बात आपने कवर की सर, कि इसको हमको स्किल डेवलप जब तक नहीं होगा, हमारी एजुकेशन का कोई भी महत्व नहीं होगा। नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सभी अखबारों ने केवल उस पॉलिसी के पक्ष को कवर किया था, लेकिन जो व्यूज हो सकते हैं उसके बारे में सभी एस्पेक्ट्स को बहुत ही अच्छे से आपने कवर किया, जो उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हर प्राध्यापक के लिए
हर छात्र के लिए, हर शोधार्थी के लिए बहुत ही गहराई से समझने वाला सिद्ध होगा। हम आपको धन्यवाद देते हैं सर। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली श्रृंखला में हमारे अगले वक्ता विषय विशेषज्ञ के परिचय हेतु कन्वीनर डॉक्टर रागिनी पांडे मैडम को पुनः आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अगले वक्ता का परिचय विस्तार करें। Thank you, Kalpana. Let me introduce Dr. B.K. Mastha to all the participants, although we are familiar with him because he belongs to our college. But it's a formality. He has been appointed as Assistant Professor in Economics in 1995. He has cleared so many exams like JRF, CAT, etc. He has done his doctorate from IIM Bangalore on relocation of urban slums, a behavioral investigation in 2014. He served in State Planning Commission as director for 2.5 years. So, it will be our pleasure. One more request for all the participants to have their laptop or another mobile with them as they can work according to the demonstration, because this session is for our learning. So now I would like to call Dr. D.K. Mastha sir for his presentation and demonstration. डॉक्टर डी.के. मस्ता सर। हाँ, सभी को नमस्कार। मुझे देख पा रहे हैं? जी सर। और सुन भी पा रहे हैं? जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। ये सबसे पहले तो सबको नमस्कार। इस ऑडियंस में बहुत अधिकांश लोग मेरे सीनियर हैं। सभी लोगों को विशेष रूप से आप लोगों का आभारी हूँ। आप लोग मुझे सुनने के लिए बैठे हैं, थैंक यू वेरी मच। मेरा टॉपिक बड़ा फंक्शनल सा है, मतलब इतने सिंपल सा कि हाउ टू ऑर्गेनाइज अ वेबिनार। इसमें लर्निंग कहाँ से हुई? जब हमने 2 महीने पहले शुरू किया सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ने एक वेबिनार करते हुए, उसी दौरान हमारी लर्निंग शुरू हुई और धीरे धीरे उसके अंतर्गत हमने क्या कि एक वेबिनार कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए सभी लोगों के लिए। बहुत सारे लोग आप में करते होंगे, तो खैर वी स्टार्ट नाउ। आप लोग मेरी स्क्रीन देखिएगा। यहाँ पे से मैं आपको डेमो देता चलूंगा बीच बीच में। सबसे पहले हम ये समझ लें कि यदि आपको वेबिनार करना है तो आपको होमवर्क करना सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे बच्चे को हम समझाते हैं कि 3 घंटे का एग्जाम देने के लिए आपको कई दिनों तक मेहनत करनी होती है। तो आपका जब हम ये एक वेबिनार जैसी कोई भी इवेंट करवाते हैं, तो इवेंट भी वैसा ही है जैसे हम एग्जाम देने जा रहे हों। कई दिनों की मेहनत इसके पीछे लगती है, तब जाके हमारा एक वेबिनार स्मूथली चल पाता है, रन हो पाता है। तो वो होमवर्क किस प्रकार का होता है, हम वहां से स्टार्ट करते हैं। MS वर्ड में आप लोग सब लोग जानते हैं कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट लगभग सभी लोगों को आता है। गूगल पे यदि हम जाते हैं तो गूगल के 3 टूल हैं। शीट जो कि गूगल शीट जो कि MS एक्सेल के इक्विवेलेंट है, गूगल डॉक जो MS वर्ड के इक्विवेलेंट है, और गूगल फॉर्म जो अलग है जिसमें हम एंट्री रजिस्ट्रेशन वगैरह लेते हैं, जो आप सब लोग रोज कई फॉर्म भरते हैं शायद। इन तीनों की फंक्शनिंग से फैमिलियर होना बहुत जरूरी है यदि आप वेबिनार को अच्छे से करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे डेमो में, अपनी शीट पे जाते हैं। शीट google.com हमने टाइप किया, हमारे पास में एक शीट खुल गई। ये हमारे होमवर्क के स्टेप्स हैं, आप लोग चाहें तो बीच बीच में नोट कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैं गया, गो टू गूगल शीट, blank, we start a new blank sheet. Now our homework starts. One thing, आप ये ध्यान दीजिएगा मेरे कर्सर को, ये एक एड ऑन पे लिंक कर रहा है, गेट एड ऑन। मेरे लैपटॉप पे पहले से इंस्टॉल था, मैंने उसको उड़ा दिया है इसीलिए, ताकि आप लोगों को बता सकूं। यहाँ पे ये एक दिख रहा है ऑटोक्रेट, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा।
ऑटोकैड देख पा रहे हैं आप लोग सब? तो इसको हम सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं। ये हमारे सर्टिफिकेट के अपने आप ऑटोमेटिक जनरेशन और ईमेल करने में बड़ा फायदेमंद होता है, बड़ा मतलब इसी की वजह से हम लोग सर्टिफिकेट आपको फटाफट भेज पाते हैं। तो ये हमने ऑटोकैड इंस्टॉल कर लिया। यस, डन। तो ये हमारा हो गया ऑटोकैड इंस्टॉलेशन का काम। दूसरे, तो ये हमारी शीट की एक बेसिक प्रिपरेशन हमारी रेडी हो गई। बड़े छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन ये छोटे छोटे स्टेप्स आपके लिए बहुत काम आने के हैं। दूसरा, हम चलते हैं गूगल डॉक्स पे। तो इसको एक बार क्लोज करते हैं और आते हैं, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, ये वाली गूगल डॉक्स। जिनको मेरी स्क्रीन अच्छे से नहीं दिख पा रही हो, ये प्रेजेंटेशन स्क्रीन, उनके लिए एक मेरा परामर्श है कि इस स्क्रीन पे जाइए, ये प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे आपको एक ड्राइंग पिन जैसी दिखेगी। अगर आपका लैपटॉप या मोबाइल है तो उस ड्राइंग पिन को अगर आप पिन कर देते हैं तो पिन हो जाती है, तो आपको लार्जेस्ट साइज में स्क्रीन दिखती है। तो उससे आप ज़्यादा अच्छे से सारे कंटेंट को देख पाएंगे। प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे जाइए और उस पर जाके आप पिन ढूंढिए और पिन को दबा दीजिए, तो ये आपकी मेन स्क्रीन हो जाएगी, आप इसको क्लियर देख पाएंगे। तो यहाँ पे हम गए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमने एक बनाया। देखिए, हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट में न जाके ये हमने एक जो सर्टिफिकेट बनाया था पिछले बार, वो सर्टिफिकेट मैं आपके डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। ये सर्टिफिकेट हम लोगों ने पिछले बार बनाया था 6 जुलाई के हमारे वेबिनार, 6 जून के वेबिनार के लिए। और तो इस प्रकार से ये सर्टिफिकेट आप लोग बनाएंगे। सर्टिफिकेट में बाकी सब चीज़ें जो आप MS वर्ड वाली स्किल है वही हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आप ये देखिए 2 वेरिएबल चीज़ें जो अभी हमको सबसे पहले सीखनी है, वो है ये वेरिएबल्स। देखिए, पार्टिसिपेंट नेम, इंस्टीट्यूट नेम, इनके दोनों के आगे अगल बगल में आप ये देखिए, ये निशान दिख रहे हैं, लार्जर देन और स्मॉलर देन, जिसको हम कहते हैं मैथमेटिक्स में। ये जो निशान दिख रहे हैं, ये हमारे मेन टैग होते हैं, जिसके माध्यम से हम सर्टिफिकेट जनरेशन की प्रोसेस को ऑटोमेशन कर पाते हैं। तो ये टैग लगाने बड़े जरूरी हैं कि मुझे यहाँ पे 2 ही वेरिएबल रखने हैं, एक तो पार्टिसिपेंट नेम और दूसरा इंस्टीट्यूट नेम। फीडबैक फॉर्म में मैं यही दोनों चीज़ें लोगों से मांगता हूँ और उसके बेसिस पे सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। अभी हम फिलहाल इसको डिलीट कर देते हैं। ये सर्टिफिकेट ये हमने बीच में लगाया था और इसे भी हम कर देते हैं और डेट को भी हम डिलीट कर देते हैं। अब ये हमारा जो है, अब ये हमारा ट्रायल टेम्पलेट हो गया है। मैं मेरे कॉलेज के लोगों को भी हटा देता हूं। तो अब आप देखिए कि ये हमारा ट्रायल टेम्पलेट रेडी है। आप अपना टेम्पलेट भी इसी प्रकार बनाएंगे। उसमें ये 2 वेरिएबल खास तौर पे ध्यान रखेंगे कि जो भी आपके वेरिएबल होंगे उसके दाएं बाएं आपको ये वाले निशान लगाने। तो ये आपकी तैयारी हो गई। दूसरी कि आपने डॉक रेडी कर लिया, शीट रेडी हो गई, डॉक रेडी हो गया, है ना। आपका ऑटोकैड इंस्टॉल हो गया, सर्टिफिकेट टेम्पलेट बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? नेक्स्ट स्टेप है कि क्या अब हम चाहेंगे कि एक मॉक रन हो जाए सर्टिफिकेट्स का। तो इसके लिए अब देखिए, मैं फिर से चलता हूं गूगल शीट पे। इसको मैंने क्लोज किया और सॉरी, इस पे मैंने क्लोज किया और गया शीट गूगल्स पे। चूंकि मैं अपने जीमेल अकाउंट पे लॉगिन हूं, इसलिए जब भी मैं जाता हूं तो मेरे अपने आप उसी पेजेस पे पहुंच जाता हूं। आप अपने लैपटॉप पे आपके जीमेल अकाउंट पे लॉगिन होंगे और उस तरह से आप भी सीधे सीधे उन्हीं पृष्ठों पे पहुंच जाएंगे जहां पे आप लोग रेगुलर काम करते हैं।
यहाँ पे हमने देखिए ये हमारे रजिस्ट्रेशन था पुराना। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मैं चाहूँ, मैं देखता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ऑटोकैड आएगा। देखिए अभी ऑटोकैड नहीं दिख रहा है क्योंकि वो लोड होने में टाइम लेता है। हाँ, ऑटोकैड ओपन, हम ओपन किया। ये ऑटोकैड आपको बड़ा सिंपल लग रहा है, सिंपल काम करने में बड़ा सिंपल है, लेकिन ये ऑटोकैड का जो जो काम है, यही आपको वो मैजिक देता है जिससे लोगों को लगता है कि आपका सर्टिफिकेट जनरेशन कितना शानदार प्रोसेस है। तो ये आपको दिखने में बड़ा सरल लग रहा है, लेकिन जो लोग इसको नहीं जानते हैं उनके लिए बड़ा मैजिकल सा होता है। तो इसे हम डिलीट करते हैं, डिलीट, और न्यू जॉब पे क्लिक करते हैं। न्यू जॉब पे फिर अगर हमने कहा FDP ट्रायल, नेक्स्ट, सर्टिफिकेट फॉर्मेट। अभी हमने जो सर्टिफिकेट फॉर्मेट नाम से सेव किया था, एक बार फिर से इसको व्यू कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये वही है ना। हाँ, ये वही है। तब हम इसको यूज करते हैं। ये हो गया सर्टिफिकेट फॉर्मेट, हमने चूज कर लिया। यहाँ पे देखिए सिलेक्शन दिख रहा है आपको। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगेन ऑटोकैड का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। यहाँ पे पूछ रहा है, आपने उस पे देखा होगा, दो मैंने आपको दिखाए थे, एक तीसरा छुपा हुआ था टाइम वाला। ये इसको मैंने लिंक किया नेम से। यहाँ पे हम फिर से एक बार मैं बाहर आता हूँ, और ये देखिए आपको पीछे में ये देखिए नेम इंस्टीट्यूट दिख रहा है। हम फिर से गए ऑटोकैड में और फिर से हमने ओपन किया। थोड़ा समय लेता है। ये अभी भी है डिलीट, वो पिछला सेव नहीं हुआ था, तो हम नया वाला सेव करेंगे। न्यू जॉब, FDP ट्रायल, ओहो ट्रायल, नेक्स्ट, एक मिनट, एडमिट। हाँ, ये हमने सर्टिफिकेट फॉर्मेट को यूज किया है, ये देखिए यूज किया। और अब हम जाते हैं नेक्स्ट में मैंने क्या किया, पार्टिसिपेंट नेम जहां पे लिखा था उसको मैंने लिंक कर दिया मेरे टेबल के नेम वाले कॉलम से, और दूसरा है इंस्टीट्यूट नेम को मैंने लिंक कर दिया इंस्टीट्यूट वाले कॉलम से। और मेरे फॉर्मेट में एक हिडन कॉलम फॉर्मेट रहता है, आपके लिए जरूरी नहीं कि आप उसको रखें। मैंने यहाँ पे टाइम स्टाम्प को भी छुपा के रखा हुआ है, ताकि मेरे सर्टिफिकेट से मुझे पता चलता है कि ये मेरा सर्टिफिकेट कौन से इंडेक्स से जनरेट हुआ है, कब हुआ है। तो ये जरूरी नहीं है, आपको ये दो से मेन मतलब रखना होगा, तीसरा आपके लिए जरूरी नहीं है। ये लिंक कर दिया तो ये समझ लीजिए कि आपके सर्टिफिकेट जनरेशन की मेजर स्टेप हो गया। हम नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, नेम, व्हाट इज सजेस्टेड नेम। एक मिनट, इसको हम क्या बनाएंगे, हम इसके लिए हर एक के लिए सर्टिफिकेट क्या बनेगा, PDF बनेगा, और मल्टीपल आउटपुट मोड होगा, क्योंकि हम हर एक के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट जनरेट होगा। तो हमने कहा, लिख दिया ट्रायल सर्ट फॉर FDP। नेक्स्ट, चूज डेस्टिनेशन फोल्डर। हम आपको आपके गूगल ड्राइव में एक डेस्टिनेशन फोल्डर चूज करना होता है, ये जरूरी होता है। ये मेरे सारे सर्टिफिकेट जो हमारे यहाँ से इशू हुए हैं, वो मैंने एक फोल्डर इसी नाम से क्रिएट किया, वेबिनार सर्टिफिकेट्स।
उसमें मेरे सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं स्टोर किए हुए, जो हमारे यहाँ से इशू हुए हैं डीबी गर्ल्स कॉलेज में मेरे माध्यम से। तो ये सारे के सारे यहाँ पे स्टोर हैं। आप इसको कोई और नाम का फोल्डर भी बना सकते हैं। ये वेबिनार सर्टिफिकेट्स मेरी अपनी सुविधा से दिया गया नाम है। मेरे गूगल ड्राइव में फोल्डर मैंने बनाया है। नेक्स्ट, डायनेमिक फोल्डर रेफरेंस ऑप्शनल बोल रहा है, ये जरूरी स्टेप नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। सेट मर्ज कंडीशन नो कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। शेयर डॉक्यूमेंट एंड सेंड ईमेल, यस। सेंड शेयर ईमेल डॉक एज PDF, allowed collaborators to reshare, no नहीं, नो ही कर देते हैं। अब यहां से टू, यहां पे मैंने क्या किया, फिर से देखिएगा, ये साइन ध्यान से देखिएगा। ईमेल, सॉरी, जो पीछे क्या लिखा है, ईमेल ADDRESS के पीछे आपको दिख रहा है यहाँ पे ईमेल एड्रेस, और सब आप यहाँ पे सब्जेक्ट वगैरह भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट ट्रायल आई। नेक्स्ट, एक और स्टेप, रन फ्रॉम ट्रिगर, रन ऑन टाइम ट्रिगर। फॉर्म ट्रिगर, टाइम ट्रिगर, ये दोनों का मतलब क्या होता है? फॉर्म ट्रिगर का अर्थ ये होता है कि आपका फॉर्म जैसे ही एक फॉर्म की पूरी एंट्री कंप्लीट होगी, वो तुरंत अपने आप एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। ज्यादातर हम लोग यही करते हैं, फॉर्म ट्रिगर यूज करते हैं। फॉर्म ट्रिगर का मतलब आपने फीडबैक फॉर्म से फ्लोट किया, लोगों को दिया, जैसे उसने एक एंट्री आप फॉर्म में भरी, एक एंट्री कंप्लीट हुई, तुरंत आपका ऑटोकरेक्ट चालू हो जाएगा और एक सर्टिफिकेट क्रिएट होगा, उस पर्सन को मेल में चला जाएगा। एक दिन की लिमिट 100 की होती है। हमारे डीबी गर्ल्स कॉलेज में चूंकि हमारे पास G-Suite फॉर एजुकेशन फ्री है, तो हमारे लिए लिमिट 250 की होती है, बट फॉर ऑल अदर्स दिस लिमिट विल बी 100 ओनली। 100 लोगों के लिए 100 सर्टिफिकेट आप एक दिन में भेज पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है कि टाइम ट्रिगर। टाइम ट्रिगर मतलब आप ये कह सकते हैं कि दिन भर में जितने भी फॉर्म भरे, वो शाम को 7 बजे सबका सर्टिफिकेट पोस्ट हो जाए। तो ये आप चाहें तो उस किस्म का आप टाइम ट्रिगर सेट कर सकते हैं, है ना। तो अभी हम फॉर्म ट्रिगर पे ही रहेंगे। और ये देखिए, ये तो इतने के बाद हम इसको सेव कर देते हैं। ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट जनरेशन में ऑटोकरेक्ट को प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करना अपेक्षाकृत, बाकी सब की तुलना में अपेक्षाकृत कठिन स्टेप है। और यदि आपने ये कर लिया तो आपका समझ लीजिए बाकी सब काम बड़े सिंपल हैं। और ये कर लेने से खास तौर पे जो लोगों ने ये काम नहीं किया, उनको बड़ा मिरेकल सा लगता है कि अभी हमने फीडबैक फॉर्म भरा, 2 मिनट के अंदर हमारे पास मेल आ गया। वो मेल इसी तरह से आता है कि आप उसके नाम में से, उसके फॉर्म एंट्री में से केवल उसका नेम और इंस्टीट्यूट नेम लेते हैं, और आपका ऑटोकरेक्ट तुरंत 2-3 मिनट के अंदर, 1-2 मिनट के अंदर आपको उसको मेल भेज देता है, और उसका सर्टिफिकेट जनरेट होके चला जाता है उसके पास। तो ये एक क्रूशियल स्टेप हो गया। तो इतना आपने होमवर्क यदि पक्का कर लिया, और इसको बार बार करके अगर आपने तैयारी कर ली अच्छे से, तो आप ये समझ लीजिए कि आप वेबिनार के लिए तैयार हो गए। वेबिनार अपने लेवल पे करने के लिए टेक्निकली आप तैयार हो गए। पर उसके अलावा जो सब्सटेंशियल जो पार्ट है कि आपको अच्छे स्पीकर ढूंढने हैं, उनसे बात करनी है, उनका समय लेना है, वो सब तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद उस सब चीज़ें अच्छे से जानते हैं। टेक्निकल पार्ट में ये अगर आपने ऑटोकरेक्ट कॉन्फ़िगर कर लिया तो समझ लीजिए कि आपने जंग जीती। हाँ, लेकिन इसकी बार बार आपको 1-2 बार आपको इसके मॉक ड्रिल करनी है। आपको जैसे एक गूगल फॉर्म क्रिएट करते हुए उसका स्प्रेडशीट से लिंक करके और सर्टिफिकेट अपने परिचितों को, जैसे अब हम लोगों ने शुरू किया था, तो मैंने सबसे पहले प्रीति कंसारा मैडम और प्रीति शर्मा मैडम को रिक्वेस्ट की थी कि वो फॉर्म भरें, और उनके पास में एक नकली वाला सर्टिफिकेट गया था, दोनों के पास में ट्रायल वाला, और उन्होंने फिर अप्रूव किया था कि हाँ ये सही है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े थे।
तो इसी प्रकार से आप लोग अपना मॉक ड्रिल जरूर करिएगा, जिससे ये पक्का हो सके कि आपकी प्रोसेस एकदम सही है। इसे एक बार हम सब क्लोज करते हैं, और इतना करने के बाद फिर हम आते हैं जो पहला स्टेप होता है आपके गूगल आपके ये वेबिनार की तैयारी का। मतलब अभी तक तो आप केवल और केवल होमवर्क पे थे, वेबिनार स्टार्ट नहीं हुआ था। अभी आप वेबिनार के लिए टेक्निकली अपने आप को तैयार कर रहे थे। अब हम आते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे क्रिएट करना है। तो हम फिर से जाते हैं फॉर्म्स, गूगल ने टाइप किया, गूगल हमको सजेस्ट करता है, ये रहा फॉर्म्स क्रिएट। हम इस पर गए, गूगल फॉर्म्स। अब चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि हमको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना है। सरल सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो आप में से बहुत सारे लोगों ने क्रिएट किया भी होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ जानकारियां ऐसी मिलेंगी जो शायद आप मिस कर गए हों। जब आप फॉर्म में जाते हैं तो सबसे पहले ये जो गियर जैसा दिख रहा है इस पे जाइए, और इस पर जाके आप यहाँ पे, मैं हमेशा ये इनेबल करके रखता हूँ कि कलेक्ट ईमेल एड्रेस, क्योंकि लगभग हर फॉर्म में हम ईमेल एड्रेस तो लेते ही, तो ईमेल एड्रेस को हम सबसे पहले यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं, और उसको मैं कर देता हूँ लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स। इसका मतलब ये है कि एक ईमेल के साथ में यदि आपने गूगल फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा तो आपका केवल एक एंट्री ली जाएगी। आप एक ही गूगल फॉर्म, एक ही ईमेल एड्रेस से 3 बार 4 बार, कई बार खास तौर पे स्टूडेंट्स के मामले में ऐसा होता है कि बच्चों को अभी हम बोलते हैं कि चलो बेटा तुम गूगल फॉर्म भर दो, और उसके बाद हम खुद उसको बैठ के क्लीन अप करते रहते हैं, क्योंकि एक एक बच्ची जो है 4-4 5-5 बार फॉर्म सबमिट कर देती है। तो अगर आप उसको लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स कर देते हैं तो एक बार में केवल एक ईमेल से केवल एक बार फॉर्म भरा जाएगा। एडिट आफ्टर सबमिट को अभी आप फिलहाल यूज मत करिए, ये भी यूज किया जा सकता है, बट अपन इतने पे ही रुकते हैं कि कलेक्ट ईमेल एड्रेस को हम चालू रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा अपने आप पहला कॉलम बन गया कलेक्ट ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर ईमेल एड्रेस के लिए कॉलम बन गया। इसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट स्टेप है, एक और हम क्वेश्चन ऐड करने के पहले हम एक और स्टेप करेंगे। यहाँ पे देखिए ये एक ग्रीन कलर का आइकॉन बना हुआ है, आप सब लोग देख पा रहे होंगे। इस ग्रीन कलर के आइकॉन को आप लोग क्लिक करिएगा तो पूछता है क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट और सेलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट। आप यहाँ पे डिफॉल्ट क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट कर दीजिए, और इसको आप चाहे तो कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने इसको नाम दे दिया FDP। अब ये हमारी एक शीट क्रिएट होगी। इस शीट पे एक कॉलम होता है हमेशा टाइम स्टाम्प, जो कि गूगल ऑटोमेटिकली लेता है कि किस तारीख को कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड पे ये फॉर्म सबमिट किया गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए गूगल शीट में एक क्वेश्चन दिख रहे हैं। अभी हम जरा फॉर्म को एडिट करते हैं। क्वेश्चंस अभी हम सबसे पहले यहाँ पे आए, और मैंने ये पहले क्वेश्चन को कर दिया डिलीट, और एक क्वेश्चन ऐड किया। क्वेश्चन के हमारे टाइप देखिएगा, पहला टाइप है शॉर्ट आंसर। जनरली जो हमारे टेक्स्ट में होते हैं जैसे नाम, इंस्टीट्यूट नेम वगैरह जो है, ये हमारे शॉर्ट आंसर हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारे पार्टिसिपेंट्स हमारे सेमिनार के बारे में, हमारे वेबिनार के बारे में चाहे तो एक लंबी टिप लिख सकें, तो हम आखिरी में कमेंट्स के लिए एक पैराग्राफ वाला क्वेश्चन रख सकते हैं। ये अपनी चॉइस होती है। MCQ वगैरह कैसे सेट करते हैं आप लोगों को बताना नहीं पड़ेगा। MCQ, चेकबॉक्स, इस प्रकार के सब प्रश्न होते हैं। फाइल अपलोड का भी ऑप्शन होता है। अगर हम चाहें कि हमारे बच्चे किसी तरह से, अगर हम बच्चों से कोई चीज़ जमा करवाना चाहते हैं तो हम फाइल अपलोड के माध्यम से गूगल फॉर्म पे उनसे हम सीधे ये एंट्रीज ले सकते हैं। ये इसके नीचे की लीनियर, मल्टीपल चॉइस, ग्रिड वगैरह फिलहाल अपने काम की नहीं है, वेबिनार के पर्पज से उनका कोई यूज नहीं है। तभी हम इतने पे आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं शॉर्ट आंसर। ये देखिए क्वेश्चन का टाइप आ गया शॉर्ट आंसर।
मैंने इस पे लिखा नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं फिर से चाहता, शॉर्ट आंसर लिखने की जगह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये आइकॉन बना है डुप्लीकेट का। हाँ, इसको मैंने कर दिया डुप्लीकेट। जिया खान का भी जो मर्डर नहीं हुआ वो सेम है सुशांत और इसका, और फिर उन्होंने साला सूरज पंचोली है आगे, वो तो खैर उसके साथ था ही, है ना, और इसको भी ना उसी से। एक मिनट, क्या कुछ बोल रहे हैं क्या? वो है करके ये भी नहीं, मैं तो कुछ दूसरा सुना हूँ। और सुनो ना कि आदित्य ठाकरे इसमें है ना, तो केस सालों एक मिनट, ये मैं इनको म्यूट कर देता हूँ, ये गलती से चालू रह गया लगता है इनका। आदित्य ठाकरे बच जाएगा। ये ऑडियो बंद कर दीजिए। हाँ सॉरी, मैंने उनको म्यूट कर दिया है। तो ये पहला हो गया। उसका दूसरा क्वेश्चन हम फिर से चाहें तो शॉर्ट आंसर और सारे स्टेप्स रिपीट करें, या हम सिंपल यहाँ पे करते हैं। ये देखिए मैंने एक दबाया डुप्लीकेट को और ये फिर से आ गया, उसी क्वेश्चन का डुप्लीकेट बन गया। यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया इंस्टीट्यूट, है ना। फिर मैंने फिर से इसका डुप्लीकेट किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया मोबाइल नंबर। हाँ ठीक है। यहाँ पे उसने जैसे ही नंबर वर्ड देखा, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गूगल कितना इंटेलिजेंट है कि जैसे ही उसने नंबर वर्ड देखा, उसने यहाँ पे सजेस्ट कर दिया कि ये यहाँ पे जो टेक्स्ट होगा वो एक नंबर होगा, और नंबर की जगह अगर आप कुछ और लिखने की कोशिश करेंगे तो वो उसको एरर बताने लगेगा। गूगल खुद इतना इंटेलिजेंट है। इसमें फॉर्म किस प्रकार फर्दर एक क्वेश्चन बनाए जाएंगे ये आप सब लोग भली भांति जानते हैं, मुझसे ज्यादा अच्छा जानते हैं। तो हम इतना के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि हम किस प्रकार करेंगे। इसके बाद क्या होता है, कई लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ से इस लिंक को कॉपी करते हैं और कॉपी करके उसको फॉर्म को भरने के लिए भेज देते हैं। उसमें दिक्कत होती है। दिक्कत ये होती है कि जहां पर भी आपका फॉर्म खुलता है वहां पे आपको मिलता है एडिट ऑप्शन। मतलब आपने जितने लोगों को फॉर्म भेजा है उन सब लोगों को एडिट का ऑप्शन मिलता है। वो उसको क्लिक करते हैं, आपके पास ईमेल आता है कि XYZ हैज रिक्वेस्टेड एडिट ऑप्शन फॉर योर फॉर्म। आपको ये नहीं, इसको कॉपी नहीं करना है। आपको कैसे फॉर्म भेजना है, आपको फॉर्म यहाँ से भेजना है। ये देखिएगा सेंड बटन को आप क्लिक करिएगा। सेंड बटन को आप क्लिक करिएगा तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप जिन लोगों को भेजना है आप डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं, यहाँ से आप भेजेंगे आपका फॉर्म ईमेल से चला जाएगा, ईमेल एड्रेस भरेंगे, सब्जेक्ट और एटसेट्रा एटसेट्रा। दूसरा उपाय ये है कि आप यहाँ पर देखिए ये जो एक बना हुआ है लिंक, चेन जैसा, चेन की कड़ी जैसा, इसको आप क्लिक करिए तो यहाँ पे ये दिखा रहा है लिंक। ये आपका लिंक है फॉर्म भरने का। इसको हम और छोटा करें तो यहाँ पे लिंक कर देते हैं हम शॉर्टन लिंक, तो हमको छोटा सा लिंक मिल जाता है। और यहाँ पे कॉपी ऑप्शन है। ये कॉपी ऑप्शन देखिए, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी, और मैं आप लोगों के चैट बॉक्स में जाता हूँ और उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। आप लोगों को देखेंगे इस प्रकार से आप उसको उठाते हैं और आपको एक रेडी लिंक मिल जाता है वेबिनार के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसको आप अपने गूगल लिंक पे आप लोगों के साथ में शेयर कर पाते हैं। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन का लिंक शेयर करना। रजिस्ट्रेशन लिंक शेयर करने में ये जो स्टेप है, इस स्टेप पे कई लोग गलती करते हैं। कई लोग यहाँ से इसको कॉपी कर देते हैं। इसको कॉपी नहीं करना है, आपको सेंड बटन पे जाना है, इसको लेना है। चाहे तो इसको शॉर्टन न भी करें, डायरेक्ट पूरे को कॉपी कर लें तब भी चलेगा, और चाहे तो इसको शॉर्ट कर लीजिए और शॉर्ट करके कॉपी कर लीजिए। ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन लिंक। रजिस्ट्रेशन लिंक आपने जो बनाया, अभी आप देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ फिर से हमारे शीट पे। ये शीट पे देखिए, जितने मैंने शीट अपने आप एडिट हो गई, जितने मैंने कॉलम ऐड किए हुए थे सारे कॉलम अपने आप यहाँ पे, जितने क्वेश्चन ऐड किए हुए थे उतने उस हिसाब से यहाँ पे कॉलम बन गए हमारे फॉर्म के हिसाब से। तो ये हमारा जो है गूगल फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए रेडी हो गया। अब अगला स्टेप, क्रिएटिंग गूगल मीट लिंक। गूगल मीट लिंक क्रिएट करने के लिए हम क्या करें, हम जाते हैं अपने गूगल अकाउंट में, कैलेंडर में।
कैलेंडर में तो हाँ नीचे दिख गया, या फिर हम लिख देते हैं गूगल कैलेंडर। गूगल कैलेंडर पे हम गए, हमने इसको क्लिक किया। यहाँ पे मान लीजिए मैंने अभी मुझे कल सवेरे के लिए एक वेबिनार का लिंक क्रिएट करना है, तो मैं क्या गया 25 तारीख पे गया 25 पे, और मैंने टाइम सेलेक्ट किया 3 बजे का। और यहाँ पे ये देखिए ऐड टाइटल, ट्रायल फॉर वेबिनार। टाइम कैसे सेट करना है आप जानते हैं, बाकी सब चीजें आप जानते हैं। ये जो क्रूशियल स्टेप यहाँ पर है वो ये है, यहाँ पे देखिए ऐड गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आप इसको क्लिक कर दीजिए। तो आपका 2:30 बजे से 3:30 बजे अगस्त 25 को मेरा अभी फिलहाल मेरे अकाउंट से एक गूगल मीट शेड्यूल हो गई है। गूगल मीट में अप टू 100 पार्टिसिपेंट्स अलाउ किए जा सकते हैं, और इस गूगल मीट का लिंक ये है। इस मीट के लिंक को मैं फिर से आपके चैट बॉक्स में डाल रहा हूं, ताकि आप देख सके कि किस प्रकार काम होता है। ये मैं चैट बॉक्स में गया और मैंने ये देखिए, ये आपको गूगल मीट का लिंक मिल गया। और ये गूगल मीट जो है आपका मीट आपकी शेड्यूल हो गई कि आपको किस प्रकार से ये आपका वेबिनार करना है 100 लोगों का। अगर आप 100 लोगों तक का वेबिनार करना चाहते हैं, छोटे छोटे कॉलेजेस ऐसे होते हैं और आजकल वेबिनार की इतनी भीड़ है कि आपको 100 से ज़्यादा लोग वैसे भी मिलने बहुत मुश्किल है, तो 100 लोगों का वेबिनार आप फ्रीली करिए। और अगर आप उससे ज़्यादा बड़ा वेबिनार करना चाहते हैं तो अप टू 250 250 तक की कैपेसिटी हमारे कॉलेज के गूगल मीट अकाउंट में है। उस केस में आपको डीवी गर्ल्स कॉलेज के किसी न किसी प्रोफेसर को अपना साथी बनाना पड़ेगा, उनका साथ लेना पड़ेगा। आप सोशियोलॉजी में हैं तो हमारे प्रीति शर्मा मैडम को, मनीषा महापात्रा मैडम को, इकोनॉमिक्स में है तो कंसारा मैडम को, और भी बहुत सारे स्टाफ है हमारे, इतने सारे डिपार्टमेंट हैं। आप यदि उनके किसी के सहयोग के साथ में काम करेंगे तो आप हमारे अकाउंट यूज कर पाएंगे। 250 लोगों की लिमिट होगी। अदरवाइज आप 100 पार्टिसिपेंट्स के साथ करते हैं तो आप इतने में आप बड़े आराम से अपना वेबिनार कंडक्ट करवा सकते हैं। जी, तो ये इतना हो गया। और एक मिनट, मुझे फिर से उधर जाके किसी को म्यूट करना होगा, मैं देखता हूँ प्लीज। ये जायसवाल जी फिर से और सबसे इंपॉर्टेंट, इतना सब मेहनत करने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपको नीचे में शेयर लिंक मिलेगा। शेयर आपको जरूर करना है। मैं आप एक मिनट में, शेयर मुझे दिख नहीं रहा है, मैं फिर से करता हूँ एक बार। ये देखिए दूसरा तरीका ये है, मैं पहले एक अलग ढंग से मैंने किया था, अभी मैं उसको दूसरे ढंग से करता हूँ। क्रिएट इवेंट, यहाँ पे फिर से हमने टाइम भरा, फिर से मैंने गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इनेबल कर दी, और मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको नीचे सेव बटन मिलेगा, उसको सेव जरूर करिएगा। अच्छा, सेव करने के अलावा यहाँ पर आप एक बीच में ऑप्शन देखिए ऐड गेस्ट। यहाँ पर आप जितने लोगों को इनवाइट कर रहे हैं उनका ईमेल एड्रेस चाहें तो पहले से भर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको पहले से भरना है, लेकिन यहाँ पर जिन लोगों का नाम, जिन लोगों के ईमेल एड्रेस आप एंटर करेंगे, उन लोगों को गूगल मीट ज्वाइन करने के लिए आपसे परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। वो जैसे ही लिंक को क्लिक करेंगे उनकी मीटिंग ज्वाइन हो जाएगी। और जिनका एड्रेस, ईमेल एड्रेस यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ऐसे लोग जब आएंगे आपके गूगल मीट के लिंक को क्लिक करेंगे तो वो वेट करेंगे, जब आप उनको अंदर अलाउ करेंगे तभी वो अंदर आ पाएंगे। यही डिफरेंस है। इसके बाद इसको सेव जरूर करिएगा। तो ये आपका गूगल मीट शेड्यूल हो गया है। अब उसके बाद हमारा अगला स्टेप आता है। अब मैं
शेयरिंग वाले हिस्से को बंद करता हूँ, स्क्रीन शेयरिंग को। हाँ हाँ, तो अब मैं शेयरिंग वाले हिस्से को बंद करता हूँ और अब आते हैं हम लोग गूगल मीट पर। अब आपकी मीट के आपने सारा होमवर्क कर लिया, सारी तैयारी कर ली, आपकी गूगल मीट के लिए पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया, आपने उनको मीटिंग में अलाउ कर दिया। अब आप उसके बाद क्या स्टेप्स हैं जो जनरली मैं फॉलो करता हूँ। कल मैंने आप लोगों को में से कई लोग जो शुरू में रहे होंगे, मैंने अनाउंस भी किया था कि गूगल मीट में आपके हाथ में केवल 2 कंट्रोल रहते हैं, या तो आप किसी को म्यूट कर सकते हैं या उसको बाहर कर सकते हैं। किसी का वीडियो ऑफ करना या और किसी प्रकार का कंट्रोल आपके पास में नहीं होता है गूगल मीट पे यदि आप होस्ट हैं तो आप किसी व्यक्ति का यदि आपको बार बार अगर ऑडियो से दिक्कत हो रही है तो आप उसको म्यूट कर दीजिए, जैसा कि अभी मुझे करना पड़ रहा था, 2 बार मैंने किया। दूसरा ये है कि यदि आपको कोई भी कारण से कोई व्यक्ति, कोई भी आपका पार्टिसिपेंट जो है बार बार उसके प्रेजेंटेशन स्क्रीन ऑन हो जा रही है और उससे पूरी या उसको कोई और दिक्कत है, तो आप उसको सीधे सीधे बाहर कर दीजिए। 2 ही ऑप्शन आपके पास। और कोशिश ये करिएगा कि जितने भी लोग हैं किसी का भी माइक अनम्यूट मत रहे, केवल जो पर्सन बोल रहे हैं केवल उन्हीं का माइक अनम्यूट रहे, बाकी सबका माइक म्यूट रहे, क्योंकि जितना ज्यादा लोगों का माइक ऑन रहेगा उतना का आवाज खराब आएगी, उतना डिस्टॉर्टेड वॉइस रहेगी। तो इतना करने और इसके बाद फिर आप इतने करने के बाद लास्ट फीचर जो है गूगल मीट का वो ये है कि जब आपकी मीट खत्म हो जाती है, आप होस्ट हैं तो आपको केयरफुली वेट करना है एक एक व्यक्ति को, चूंकि बाहर भेजने का, वरना वो बहुत देर तक अगर लोग अंदर बैठे रुके हुए हैं तो आपको आपकी मीट चालू ही रहती है 2 घंटे, 1-1.5 घंटे 2 घंटे बाद भी चालू रहती है जब तक लोग बाहर न जाए। तो आपको लास्ट में जब सब लोग छोड़ के चले जाएं, उसके बाद अगर 1-2 लोग जो भूल से अंदर रह गए हैं, अपना मोबाइल या लैपटॉप में मीट चालू करके चले गए हैं इधर उधर और उनको पता याद ही नहीं है, उन सबको आप बाहर कर दीजिए और बाहर करने के बाद अपनी गूगल मीट को क्लोज कर दीजिए। आपका वेबिनार सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अब आपको सर्टिफिकेट जनरेट करना है। सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए आप फीडबैक फॉर्म लोगों के बीच में फिर से सर्कुलेट करेंगे और फीडबैक फॉर्म में जैसा आपको याद होगा कि हमारे जो फॉर्म था उसमें मैंने क्लियर लिखा था कि नेम एज यू वांट इन योर सर्टिफिकेट, इंस्टीट्यूशन नेम एज यू वांट इन योर सर्टिफिकेट, जिससे लोग बहुत केयरफुली अपना नाम लिखें, कैपिटलाइज करें प्रॉपरली, हाँ कैपिटलाइज करें प्रॉपरली और उस तरह से लिखें। और उसके बाद फिर आप ऑटोक्रेट को इनेबल करेंगे, लोगों के पास में सर्टिफिकेट जो है पहुंच जाएगा। तो लोग ये कहेंगे कि शाम को 7 बजे वेबिनार खत्म हुआ, हमने 8 बजे हमने फीडबैक लिंक भरा, 8:02 पे हमारे पास सर्टिफिकेट आ गया। तो इतने सिंपल से स्टेप्स हैं, लेकिन होमवर्क यदि आप अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो बगैर तैयारी के करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लास्ट मिनट पे कई सारे टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकते हैं। और पहले से यदि आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है आप सब लोगों के लिए। आप सब लोग विद्वान लोग हैं, काफ़ी कुछ जानते हैं आप लोग, तो बस इतना ही है वेबिनार ऑर्गेनाइज के बारे में कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि हमारे शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला महाविद्यालय द्वारा ऑटोनॉमस और IQAC सेल के तत्वावधान में 3 दिवसीय FDP कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें आज दूसरे दिवस के कार्यक्रम में जो हमारे बीच अतिथि वक्ता उपस्थित हुए, मैं उनके प्रति पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से आभार प्रदर्शित करना चाहती हूँ। हमारे बीच विषय विशेषज्ञ के रूप में आज डॉक्टर R श्रीधर सर एवं डॉक्टर DK मस्ता सर उपस्थित हुए। डॉक्टर R श्रीधर सर ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही अच्छे तरीके से हम सभी के सामने रखी और यह बताया कि यह जो नई शिक्षा नीति है वह किस तरह से हायर एजुकेशन के लिए और एजुकेशन के साथ साथ पूरे समाज के लिए
किस प्रकार से लाभदायी होगी और क्या इसका सुधार पर और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। निश्चित रूप से हमारे सारे प्राध्यापकगण इस नई शिक्षा नीति से अवगत हुए होंगे। हमारे दूसरे अतिथि वक्ता डॉक्टर डी.के. बस्ता, जो कि मेरे साथी प्राध्यापक भी हैं, इन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में ऑनलाइन प्रोग्राम के बारे में हमें अवगत कराया। मुख्य रूप से हमारी यही समस्या होती है कि हम सभी प्रोग्राम को आयोजित तो करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सी छोटी छोटी तकनीकी परेशानियां हमें आती हैं क्योंकि हमारे लिए ये सब नया है। सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने अत्यंत ही सरल शब्दों में इस ऑनलाइन कार्यक्रम की व्यवहारिक प्रक्रिया को हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया। धन्यवाद सर। मैं महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया डॉक्टर श्रद्धा गिरोलकर मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। उनके लगातार नेतृत्व, सहयोग और मार्गदर्शन से हमारा यह कार्यक्रम आयोजित हो पा रहा है। महाविद्यालय में इस कार्यक्रम के आयोजन की जो कमेटी है, उस कमेटी और IQAC सेल, ऑटोनॉमस सेल, इन सभी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। आप सभी प्रतिभागी जो कि लगातार हमारे दोनों दिवस के कार्यक्रम में जुड़े रहे, इन प्रतिभागियों की उत्साह के वजह से ही हमारा यह कार्यक्रम इतने सफलतापूर्वक संचालित हो पा रहा है। तो मैं समस्त प्रतिभागियों का भी पूरे महाविद्यालय की ओर से हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इस कार्यक्रम की फीडबैक की लिंक कल डिस्प्ले की जाएगी चैट बॉक्स के माध्यम से। उम्मीद करती हूँ कि सभी प्राध्यापकगण, प्रतिभागी इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो रहे होंगे और कल पुनः इसी आशा के साथ कि हम पुनः कुछ नया सीखेंगे, मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद। हमारे कल के कार्यक्रम में जितने लोग उपस्थित थे उनकी सूची हमारे पास है। आज भी जो लोग उपस्थित हुए हैं उनकी सूची हमारे पास सीधे सीधे गूगल मीट से ही मिल जाती है। तो उसके अलावा आप लोग फीडबैक फॉर्म भरेंगे, उससे हम क्रॉस चेक करेंगे और अब उस हिसाब से प्रमाण पत्र इशू किए जाएंगे। थैंक यू सो मच।